and welcome back to my channel Aditi GS Center, and let's begin with our lesson, that is Europe and India. So this chapter is of 8th standard and its subject is the history. So in this chapter there are the two parts, and now we will see about our first one part. So the first one part included these 6 points. The first one point name is period of Renaissance, second one point name is religious reform movement, third one point name is geographical discoveries, fourth one point name is intellectual revolutions in Europe, then fifth one point name is revolutions in the political sphere, and sixth one point name is American War of Independence. So during the modern period, the various happenings in the Europe has its impact on the India. So therefore, while studying the period of the modern Indian history, it is necessary to study about the events happening in the Europe ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो आधुनिक अवधि के दौरान कई सारे घटनाएं जो थी यूरोप में घटती थी, उसका प्रभाव भारत पर भी होता था. इसीलिए जब भी हम आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो तभी हमको यूरोप में कौन सी घटना घटती है इसके भी बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है. सो नाउ वी विल सी अबाउट आवर फर्स्ट वन पॉइंट, दैट इज़ द पीरियड ऑफ रिनेसेंस यानी पुनर्जागरण की अवधि. सो इन द हिस्ट्री ऑफ द यूरोप, the last phase of the medieval period, 13th to 16th century, is known as the period of Renaissance. During this period, Reformation, religious reform movement and geographical discoveries led to the foundation of the modern era. Hence, that is why this period is known as the Age of Revolution. एज ऑफ रिनेसेंस. तो यूरोप के इतिहास में जो सबसे अंतिम वाला जो चरण होता है मध्यकालीन अवधि का, 13th और 16वीं शताब्दी तक, तो इसे क्या कहा जाता है? पीरियड ऑफ रिनेसेंस यानी पुनर्जागरण की अवधि. और इस अवधि के दौरान कई सारे सुधार, धार्मिक सुधार आंदोलन और भूगोलिक खोजों ने ये जो आधुनिक युग है इसकी नींव रखी थी. और इसीलिए ये जो अवधि है इसे क्या कहा जाता है? एज ऑफ रिनेसेंस यानी पुनर्जागरण का युग. So during this period, in the field of the art, architecture, philosophy, etc., there was the revival of the Greek and the Roman tradition. तो इस अवधि के दौरान कला, संरचना और फिलोसॉफी के कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में ग्रीक और रोमन ट्रेडिशन जो थी इनमें ये उभर गए थे सब, आर्ट, फिलोसॉफी और आर्किटेक्चर. एंड ड्यूरिंग द रिनेसेंस, ह्यूमैनिटेरियनिज्म was given the great impetus, and there was the change in the outlook of treating each other as the human being. So instead of the religion, man become the center point of all ideologies. तो इस अवधि के रिनेसेंस यानी पुनर्जागरण अवधि के दौरान जो मानवतावाद है उसे बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता था. और इस अवधि के दौरान जो इंसान है इसको एक दूसरे के रूप में व्यवहार करने के रूप में भी परिवर्तन हुआ था. और धर्म के अलावा जो मानव है या जो इंसान है ये सभी विचारधाराओं के केंद्र बिंदु बन चुके थे. एंड द रिफॉर्म मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट द ऑल सेक्टर्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ. And through knowledge, science as well as different sections of the art, we can observe the discoveries of the reform movement. तो जब भी हम जो रिफॉर्म मूवमेंट है यानी जो सुधार आंदोलन है ये मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में फैल गया था. और हम ज्ञान, विज्ञान और कला के कई सारे अलग अलग क्षेत्रों के द्वारा हम जो आधुनिक जो रिफॉर्म मूवमेंट है यानी जो सुधार आंदोलन है उसकी खोज का हम निरीक्षण भी कर सकते हैं. सो द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ द रिनेसेंस पीरियड depict the sentiments and emotions of the people. So the literature was produced in the common people languages for the better understanding to the common people. तो जो आर्ट एंड लिटरेचर यानी जो कला और जो साहित्य थी ये सब का निर्माण किया जाता था. और ये जो होते हैं आर्ट एंड लिटरेचर ये लोगों के भावना और भावनाओं को दर्शाते हैं, डेपिक्ट यानी दर्शाते हैं. और जो साहित्य था उसे सामान्य लोगों के लैंग्वेज में लोकल लैंग्वेज में यानी स्थानीय भाषा में उसका निर्माण किया गया था, क्योंकि जो सामान्य लोग हैं उससे उनको अच्छी तरह से और एकदम आसानी से समझ सके इसीलिए. सो ड्यूरिंग 1450 AD, 1450 AD means during 1450 AD, Johannes Gutenberg from Germany had discovered the printing press, and due to these discoveries, new ideas, concepts and knowledge reached to all sections of the society.
So during 1450 AD, the Johannes Gutenberg from Germany had discovered the printing press. So due to these discoveries, the various ideas, concepts and knowledge reach to all sections of the human life as well as society. तो जो जोहानस ग्यूटेनबर्ग जो थे 1450 AD में, AD का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, तो 1450 AD में जो जोहानस ग्यूटेनबर्ग थे जो कि जर्मनी देश से थे, तो उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस जो है उसकी खोज किया, उसका निर्माण किया था। और ऐसे खोज की वजह से जो कई सारे नए नए विचार, विचारधाराएं और ज्ञान विज्ञान ये समाज के कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में फैल चुका था। सो आवर फर्स्ट वन पॉइंट दैट इज द पीरियड ऑफ रिनेसेंस, इट इज गेट कंप्लीटेड. Now we will see about our first one topic, that is Leonardo da Vinci. We will see a short information on Leonardo da Vinci. So he is recognized as an all-round personality of the period of the Renaissance and he was well versed in the different branches of science as well as art. तो लियोनार्डो दा विंसी जो थे, इन्हें जो रिनेसेंस पीरियड है यानी जो पुनर्जागरण की अवधि है, इस पुनर्जागरण की अवधि के एक सर्वज्ञ व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। और वो कई सारे अलग अलग कला और जो विज्ञान है उसके कई सारे अलग अलग शाखाओं में, ये क्षेत्र में वो पारंगत थे। एंड ही वॉज वेल वर्स्ड इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सब्जेक्ट्स सच एज द स्कल्पचर, architecture, mathematics, engineering, astronomy as well as music. But he became world renowned as the painter and his paintings of Mona Lisa and the last superpower become immortal. तो वो मतलब उन्होंने कई सारे अलग अलग जो उनके सब्जेक्ट्स थे, विषय थे, जैसे कि संरचना या कुछ मूर्तिकला, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग थी और संगीत था और एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान, इस सब में वो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने महारत हासिल कर ली थी। और लेकिन वो विश्व प्रसिद्ध एक पेंटर के रूप में हुए थे, एक चित्रकार के रूप में हुए थे। और उनके जो चित्र है मोनालिसा के और द लास्ट सुपर पावर के, ये इमोर्टल यानी डेथलेस हो गए थे, अमर हो गए थे। सो दिस इज द शॉर्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द लियोनार्डो दा विंसी दैट वी हैव सीन, इट इज गेट completed. Now we will see about our second one point, that is the religious reform movement, means धार्मिक सुधार आंदोलन. The independent intellectuals attacked the old religious ideologies of the Roman Catholic Church and the Christian priests were taking the advantages of the ignorance of the common people and were indulged in the unnecessary rituals. तो जो इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स यानी जो स्वतंत्र बुद्धिजीवियाँ जो थी, उन्होंने जो रिलीजियस आइडियोलॉजीज यानी जो ओल्ड रिलीजियस आइडियोलॉजीज जो है यानी पुरानी जो धार्मिक विचारधारा है रोमन कैथोलिक चर्च की, तो उस पर उन्होंने आक्रमण किया था। और जो क्रिश्चियन पुजारी या पंडित जो थे, ये लोगों के अज्ञानता का फायदा उठा रहे थे और जो अनुष्ठान रिचुअल्स जो थे उसमें वो लिप्त थे। एंड दे लूटेड द पीपल इन द नेम ऑफ religion. So the movement that began against it is known as the religious reform movement, and due to this movement human freedom as well as its rationalism gained more importance. तो जो वो लोगों को वो एक धर्म के नाम पर लूटते थे और एक आंदोलन जो इसके विरुद्ध होने लगा, तो इस आंदोलन को क्या कहा जाता है? रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट यानी धार्मिक सुधार आंदोलन। तो इस आंदोलन की वजह से या इस मूवमेंट की वजह से जो मानव की जो स्वतंत्रता है और उनकी जो तर्कवाद है, इसे बहुत ही ज़्यादा महत्व मिला था। सो आवर सेकेंड वन पॉइंट दैट इज रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, इट इज ऑल्सो गेट कंप्लीटेड. So now we will see about our third one point, that is the geographical discoveries यानी भूगोलिक खोजें. So in 1453 AD, the Ottoman Turks had conquered the Constantinople, means Istanbul, which is the capital of the Byzantine Empire, and the overland trade routes joining Asia and Europe went through this city. तो जो 1453 AD के दौरान जो ओटोमन तुर्क्स जो थे, उन्होंने कंस्टेंटिनोपल यानी इस्तांबुल पर विजय प्राप्त कर ली थी, जो कि बाइजेंटाइन साम्राज्य जो है उसकी राजधानी है। और जो ओवरलैंड ट्रेड रूट्स यानी जो व्यापार के रास्ते हैं इंग्लैंड और एशिया के बीच में, ये इसी शहर से होकर यूरोप और एशिया के बीच में जो व्यापार के रास्ते हैं, ये इसी शहर से होकर जाती है।
Since the Turk blocked this route, there was the need of finding alternative trade routes for the European countries to reach the Asia, and this led to the new phase of the geographical discoveries. तो जो टर्क्स जो थे, इन्होंने ये जो रास्ता है जो यूरोप और एशिया के बीच में जो व्यापार होने वाला जो रास्ता है उसको अवरुद्ध कर लिया था। इसीलिए जो यूरोपीय देश जो थे उनको नया एक रास्ता ढूंढने की आवश्यकता थी, और इससे जो भौगोलिक खोज है इसमें एक नया फेज यानी चरण निर्माण हुआ। सो ड्यूरिंग 15th century, यूरोपियन सेलर्स वेंट ऑन द एक्सपेडिशन टू डिस्कवर द सी रूट्स टू इंडिया। तो 15वीं शताब्दी के दौरान जो यूरोपीय नाविक जो थे उन्होंने अभियान चलाया था भारतीय समुद्रीय मार्ग को खोजने के लिए। सो इन द 1487 AD, द बार्टोलोम्यू डियाज, a Portuguese sailor, began his expedition in search of India, and he reached at the tip of the African continent, which we know as the Cape of Good Hope. तो 1487 AD के दौरान जो बार्टोलोम्यू डियाज जो थे ये एक पोर्तुगीज नाविक थे, और इन्होंने अपना अभियान चलाया था भारत के खोज में, लेकिन वो अफ्रीकीय कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप जो है उसके सबसे ऊपरी भाग पर पहुंच गए थे, जिसे आज हम केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। उधर वो पहुंच गए थे, भारत में नहीं पहुंचे थे। सो सेकेंड वन इज इन 1492 AD, द क्रिस्टोफर कोलंबस set on his journey towards the India by sailing towards the west, but reached to the eastern coast of America. तो 1492 AD के दौरान जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे उन्होंने अपनी जो यात्रा है इसे भारत की तरफ सेट किया था, भारत की तरफ उन्होंने सेट किया था, और वो वेस्ट की तरफ अपनी जो शिप या जो बोट है उसको मुड़ाते हुए वो भारत की तरफ आना चाहते थे, लेकिन वो अमेरिका के जो पूर्व तट है उधर ही पहुंच गए थे। एंड इन 1498 AD, Vasco da Gama had managed to sail the past Cape of Good Hope but reached to the Indian coast in Calicut. तो 1498 AD के दौरान जो पोर्टुगीज सेलर जो थे, पोर्टुगीज नाविक जो थे वास्को डा गामा, वो भारत में पहुंचे थे, भारतीय तट में पहुंचे थे जो कि कैलिकट में है, और एट लास्ट वास्को डा गामा ही पहुंचे थे। एट लास्ट वास्को डा गामा रीच टू द इंडिया, बार्टोलोम्यू डियाज एंड क्रिस्टोफर कोलंबस डिड नॉट रीच टू इंडिया, वास्को डा गामा at last reached to India. So the third one point, that is the geographical discoveries, it is get completed. Now we will see about our fourth one point, that is intellectual revolutions in Europe, यानी यूरोप में बौद्धिक क्रांति। So due to the changes during the Renaissance period, Europe proceeded from the medieval to the modern age, and the intellectual revolution took place in the same period, and the society starts stepping out from the past ignorance and the blind faith. तो जो रिनेसेंस है यानी जो पुनर्जागरण है उसके अवधि में परिवर्तन के कारण जो यूरोप था वो मध्यकालीन अवधि से आधुनिक युग की तरफ अग्रसर हुआ था, और जो इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन यानी जो बुद्धिक क्रांति जो है ये इसी अवधि के दौरान हुई थी, और जो समाज था वो अतीत के अज्ञानता और अंधविश्वास से बाहर निकलने लगा। The pre-established customs and traditions came to be seen from a critical point of view, and all these changes are addressed as the intellectual revolution, which gave further momentum to the scientific discoveries in Europe. तो जो प्री इस्टेब्लिश यानी जो पूर्व स्थापित जो परंपरा और जो रीति रिवाज थे उसे हम एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा, और इस सभी जो परिवर्तन है इसे क्या नाम दिया गया? इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन यानी बौद्धिक क्रांति, जिसने कि जो यूरोप में जो कई सारे जो वैज्ञानिक खोज है उसको एक गति दी। So our fourth one point, that is the intellectual revolution in Europe, it is also get completed. Now we will see about our fifth one point, that is revolutions in the political sphere, यानी राजनीतिक कार्यों में या political sphere में revolution यानी क्रांति। So in the early stage of the beginning of the modern period or in the Europe, many political changes took place, and due to the various revolutionary events during the 18th as well as 19th century, this period is known as the age of revolutions, and during this period there was the development in the parliamentary democracy in England. तो यूरोप में आधुनिक युग के शुरुआत
के प्रारंभिक में कई सारे जो राजनीतिक परिवर्तन हुए थे और इस अवधि के दौरान 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान कई सारी 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान कई सारे क्रांतिकारी घटनाएं घटती थी, रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स होते थे। इसीलिए ये जो अवधि है इसे क्या नाम दिया गया है? रिवॉल्यूशनरी पीरियड नाम दिया गया है, यानी क्रांतिकारी युग नाम दिया गया है, एज ऑफ रिवॉल्यूशंस यानी क्रांति का युग। सो इस अवधि के दौरान जो इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है यानी जो संसदीय लोकतंत्र है इसमें भी विकास हुआ था। एंड देयर वाज द चेंज in the form of the cabinet system and the Bill of Rights 1689 laid the limitations on the power of the king and the sovereignty of the parliament was established। तो कई सारे जो कैबिनेट सिस्टम मतलब जो कैबिनेट सिस्टम है, कैबिनेट प्रणाली है, उसमें भी परिवर्तन हुआ था। और जो बिल ऑफ राइट्स है 1689 के, उसने जो मतलब राजाओं के जो शक्ति है उस पर भी सीमाएं लगा दी थी और जो पार्लियामेंट है उसकी जो संप्रभुता है इसकी भी स्थापना हुई थी। सो आवर फिफ्थ वन पॉइंट दैट इज रिवॉल्यूशंस इन द पॉलिटिकल स्फीयर, इट इज गेट कंप्लीटेड। Now we will see about our last sixth one point that is American War of Independence यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। So with the discovery of the America, the European countries pay attention towards this continent and the imperialist European countries had took control of the different regions of America and established their colonies, and the European countries established 13 colonies on the east coast of अमेरिका। तो जैसे ही अमेरिका देश की खोज हुई तो वैसे ही यूरोपीय देश जो थे उन्होंने अपना ध्यान इसी महाद्वीप के ऊपर लगा दिया था और जो इंपेरियलिस्ट यूरोपीय देश जो थे यानी जो साम्राज्यवादी यूरोपीय देश जो थे ये अमेरिका के अलग अलग क्षेत्रों जो है उस पर नियंत्रण करने लगे थे और अपने जो उपनिवेश है यानी जो कॉलोनीज है उसकी भी स्थापना वो करने लगे थे। और अमेरिका के जो पूर्व तट है उधर उन्होंने अपनी 13 उपनिवेश की स्थापना कर ली थी, 13 कॉलोनीज उन्होंने स्थापना कर ली थी। इनिशियली द इंग्लैंड हैड द नॉमिनल डोमिनेशन ओवर दिस कॉलोनीज बट लेटर इंग्लिश पार्लियामेंट लेड ऑपरेसिव रेस्ट्रिक्शंस एंड द टैक्सेस ऑन दिस कॉलोनीज। सो द पीपल ऑफ अमेरिका रिवोल्टेड अगेंस्ट इट एंड द इंग्लैंड डिक्लेयर्ड वार टू सप्रेस दिस कॉलोनीज। तो इनिशियली इंग्लैंड जो था उसका नॉमिनल डोमिनेशन था, इस नॉमिनल राज्य था इस कॉलोनीज के ऊपर, उपनिवेश के ऊपर। तो जो इंग्लिश की जो पार्लियामेंट है इन्होंने ये जो कॉलोनीज है, उपनिवेश है, इस पर वो विरोध करने लगे और टैक्सेस भी लेने लगे। तो इसीलिए जो लोग थे अमेरिका के उन्होंने विरोध कर लिया। तो जो इंग्लैंड है उन्होंने ये जो कॉलोनीज है, उपनिवेश है, इसको दबाने के लिए उन्होंने जंग की आयोजना की, यानी उन्होंने वार खड़ी कर दी थी, जंग की आयोजना कर ली थी। एंड द अमेरिकन कॉलोनीज ऑर्गेनाइज्ड द आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ द जॉर्ज वाशिंगटन एंड फाइनली वॉन द वार अगेंस्ट द यूरोप। So the new nation known as the United States of America means this all of the event is known as the American War of Independence, and the new nation known as the the new nation known as the United States of America with the written constitution, federal government and based on the principles of democracy was born। तो फाइनली ये जो मतलब जो अमेरिका के जो उपनिवेश थे ये किसके इन्होंने आर्मी की आयोजना जॉर्ज वाशिंगटन के लीडरशिप के अंदर की थी और फाइनली सफलतापूर्वक वो यूरोप के अगेंस्ट जो लड़ाई थी उनकी वो जीत चुके थे। और एक नया देश जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक लिखित संविधान के साथ, संघीय सरकार के साथ और लोकतंत्र के आधार पर चलने वाला एक देश, इसका जन्म हुआ था। So our sixth one point that is American War of Independence, it is also get completed. So this is our the first one part of the chapter Europe and India. I hope you understand my teachings. So in this chapter or in this part we have learned about the during the modern period the various happenings in the Europe has its impact on the India. So we have seen about our first one point that is period of Renaissance. So in the history of the Europe, the last phase of the medieval period,
13th to 16th century is known as the period of the Renaissance, and during this period, Reformation, religious reform movement and geographical discoveries led to the foundation of modern era. Then we have seen that the reform movement spread throughout all sectors of the human life, and the art and literature depict the sentiments and emotions of the common people. And during 1450 AD, Johannes Gutenberg from Germany had discovered the printing press. Then we have seen about our one topic, that is Leonardo da Vinci. We have seen a short information on Leonardo da Vinci. So Leonardo da Vinci became world renowned as the painter, and his paintings of Mona Lisa and the last superpower become immortal. Then second one point we have seen, that is religious reform movement. In it we have seen that the independent intellectuals attacked the old religious ideologies of the Roman Catholic Church, and the Christian priests were taking the advantages of the ignorance of the common people and were indulged in unnecessary rituals. So they looted the people in the name of religion, and the movement that began against it is known as the religious reform movement. Then next one, the third one point we have seen, that is geographical discoveries. In it we have seen that in 1453 AD, the Ottoman Turks had conquered the Constantinople, means Istanbul, which was the capital of Byzantine Empire. And the overland trade routes joining Asia and Europe went through this city, but the Turks had blocked this route. So therefore it was the need for the European countries to find the alternative trade routes for the trade. Then we have seen that during 15th century, European sailors went on expedition to discover sea routes to India. So we have seen about the three of the persons who want to reach the India. We have seen that in the 1487 AD, Bartolomeo Dias, a Portuguese sailor, tried to reach the India, but he reached to the Cape of Good Hope. Then second one we have seen that in 1492 AD, Christopher Columbus had set his journey towards the India by sailing towards the west, but he reached to the eastern coast of America. At last we have seen that 1498 AD, Portuguese sailor Vasco da Gama had managed to sail the past Cape of Good Hope, but reached to the Indian coast in Calicut. At last, who reached to the India? Vasco da Gama. So then next one point we have seen, fourth one, that is intellectual revolution in Europe. In it we have seen that the society starts stepping out from the blind faith and the past ignorance, and due to the changes during the Renaissance period, the Europe proceeded from the medieval and to the modern age, and intellectual revolution took place in the same period. So the pre-established customs and traditions came to be seen from a critical point of view. That is why all these changes are addressed as the intellectual revolution. The next one, fifth one point, we have seen that revolutions in the political sphere. In it we have seen that there was the changes in the change in the political changes. Then we have seen that due to the various revolutionary events during the 18th as well as 19th century as well as period, this period is known as the age of revolutions, and the Bill of Rights 1689 laid the limitations on the power of the king. At last, sixth one point we have seen, that is American War of Independence. In it we have seen that the America was discovered. That's why the European countries paid their attention towards this continent. Then how they established their colonies in the America, how they capture the different regions of America, and they started restricting or collecting the taxes from these colonies of the America, and they have established 13 colonies on the east coast of America. And then we have seen that the American people revolted against them because they were collecting the taxes, and they were because they were collecting the taxes. So that's why the England declared war to suppress these colonies, and the American colonies organized the army under the leadership of whom? George Washington, and finally they won the war against the Europe, and the new nation known as United States of America was born. So this is the first one part of the chapter Europe and India. I hope you understand my explanation. So if you have any doubt, you may comment in the comment section. Thank you.